भारत अमेरिका संबंधों प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और व्यापकता देने में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस बात के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। है कि आपने एलोन मस्क के लिए पूछा है। देखिए, मेरा उनका बहुत पुराना परिचय रहा है। मैं प्रधानमंत्री भी नहीं था, जब मैं मुख्यमंत्री था तब से मेरा उनका परिचय है। और आज वो एक पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ मिलने के लिए आए थे और स्वाभाविक है कि एक पारिवारिक वातावरण में उनके साथ मेरी गपगोष्ठी हुई है। जहां तक डील का सवाल है, आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं समझता हूं पूरी दुनिया में डील शब्द का कॉपीराइट एक ही व्यक्ति का है और उस व्यक्ति का नाम है ट्रंप। आप जानते हैं, मैं रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। और भारत का लगातार प्रयास रहा है कि दोनों लोग जिसमें मौजूद हो वैसे फोरम में बातचीत होगी, तब कोई रास्ता निकलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप हो सके उतना जल्दी सफल हो, ताकि दुनिया में शांति के रास्ते खुले। Well, I think more than anything else will be the unity. We have great unity. We have great friendship, he and I and our countries. And I think it's only going to get closer. But it's very important that we remain united as countries. We're friends and we're going to stay that way. President, how are you going to fight China if you're going to be tough with India on trade? How are you going to beat China then? We're in very good shape to beat anybody we want, but we're not looking to beat anybody. We're looking to do a really good job. We're
we've done a fantastic job for the American people. We had a great 4 years, and we were interrupted by terrible administration, absolutely terrible. They didn't know what they were doing, and now we're putting it back together, and I think it's going to end up being much stronger than it was before, even much stronger than it was before. प्रधानमंत्री जी आप हमेशा से रूस May I? Yeah. President Trump, first of all, congratulations for the fantastic 24 days of your presidency. Historic and unprecedented decisions that you made, transformational reforms. I'm particularly impressed by the expose on USAID. And I would like you to share with us if you think USAID had a role in election interference in the US in 2020 and Indian elections in 2024. So it could have had a role. There were a lot of bad things that happened in 2020. I think bad things happened in 2024, but it was too big to rig. We won by a tremendous margin. We won every swing state. We won the popular vote by millions of votes. So it was too big to rig. But yeah, I think they probably tried. We're looking to go to a system now much different, where one-day voting, voter ID, and we have to do that. And paper ballots. We want paper ballots. And when they do that, we're going to clean it up very, very well. But we had a great 2016. We had a much better 2020 election, but bad things happened. And we had the best of all. We had, they say, the most consequential in history, 129 years, most consequential. So it was a great election. And it gives me a chance to work again with the Prime Minister and India. And we're going to have a great relationship together. Mr. President, do you see प्रधानमंत्री जी कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है और युद्ध को रोकने की बात कही है आप हमेशा से सर Do you see India playing a role in your plan to broker a peace in Ukraine? And if I could ask you about a development in your hometown today, the U.S. attorney has resigned over the DOJ's request to drop the case into Eric Adams. Did you personally request the Justice Department to drop that case? No, I didn't. I know nothing about it. I did not. I think that, just to answer your other question, we're just going to get along well. We're going to get along with all countries. We're going to do very well. We're going to be doing, I think, record business, record numbers. And we're going to work with India also. We have some very big trade deals to announce in the very near future. प्रधानमंत्री जी कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है आप दुनिया के अकेले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मीटिंग की है प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मीटिंग की है पहले प्रेसिडेंट बाइडेन से मिले और अब प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले आपको लग रहा है कि जिस शांति की बात आप करते आए थे उसमें अब भारत रूस और यूक्रेन को युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर कोई नया रास्ता बना सकता है और दूसरा प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आने वाले हैं प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं तो क्या भारत भूमि से शांति का संदेश जा सकता है And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration. Then Muhammad Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? And what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was, this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. जहाँ तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है भारत न्यूट्रल नहीं है भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति हम पहले दिन से ही और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है और मेरा एक कन्विक्शन है
कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। As far as the Russia-Ukraine conflict is concerned, I'm very happy that President Trump has taken initiatives to restore peace and had telephone calls with President Putin and President Zelensky. The world had this thinking that India somehow is a neutral country in this whole process, but this is not true. India has a side, and that side is of peace. From the very first day, I have been talking about the importance of dialogue and diplomacy and a peaceful solution. And when I met President Putin in the presence of media, I had told him that this is not the era of war, and I have firm conviction that problems cannot be resolved on the battlefield. The two sides will have to come to the negotiating table. शांति के हर प्रयास का हम समर्थन करते हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उनका हर सख्त समर्थन करता हूं। We support all efforts aimed at establishing peace. Can you let him translate, please? Trump has taken, Just we wait. welcome it and support it. I just want to add to that. We had a very good phone call yesterday with President Putin. It lasted maybe an hour and a half. It was excellent, and I think we went a long way toward getting a solution to the horrible war where so many people are being killed, especially soldiers on the battlefield. At least 1.5 million soldiers have been killed on a ridiculous war that would have never happened if I were president. But we've got a long way to, I think we've got a long way to solving it. Tomorrow there's a meeting in Munich, and then next week there's a meeting in Saudi Arabia, not with myself or President Putin, but with top officials. And Ukraine will be a part of it too. And we're going to see if we can end that war. That war is a horrible war. It's a vicious, bloody war. We want to end it. To your other question, that U.S. attorney was actually fired. I don't know if he or she resigned, but that U.S. attorney was fired. Okay, go ahead. What is the role, Prime Minister, I have a question. With the US competition What- with China, say what it. is the role that you expect India to play with the US competition with China and in your broader vision for peace in the Middle East? US or China के competition. Well, I think we're doing very well in our competition with everybody. I think you're going to see a nation that really is going forward at a very rapid pace. Our economy is going to be fantastic. We're doing things to make it that way. We announced some very big elements today of success. I call it an element of success. Reciprocal tariffs, so that somebody charges us, we charge them the same amount, which has never been done in our country before. We've always been taken advantage of by other countries, and we allowed that to happen foolishly, but we're not going to allow that any longer. So I think we're going to do very well. We've been doing they say the last 3 weeks was among the best 3 weeks ever for a start in a presidency. There's never been anything like it. And when you see what we've been able to do in 3 weeks, people are really amazed. Even the Prime Minister mentioned it. I think other countries are looking at it. But I just want to thank everybody for being here. This is a terrific man. We're going to make some wonderful trade deals for India and for the U.S. And thank you all very much. Thank you very much. Appreciate it. Thank you, everybody. Great to see you again. We missed you. We missed you a lot.